गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वर्ल्ड विद पवन। मैं पवन कुमार आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर क्रैश कोर्स 2020। दिस सेशन will be covered in 75 days, and that session is very helpful for upcoming SSC, railway and banking exam. This session will cover up all competition exam, and I sure all question will be come from this 75 days session. Please subscribe, share and like it to continue it. And in this session we will be cover up November 2019 to July 2020. Now start day 22. क्वेश्चन फर्स्ट। हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार ड्रोन के मालिक और उपयोग के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? आंसर इज 18 वर्ष। नेक्स्ट। LIDAR क्या है? आंसर इज रिमोट सेंसिंग मेथड। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? प्लीज कमेंट योर आंसर in comment box, and I sure all question will be come from this 75 days session, and in this session we will be cover from November 2019 to July 2020, and approx we will be cover up 1500 question in this session. And answer is Kannada. Next. 163348 2002 NN4 समय खबरों में है। यह एक है। यह किससे संबंधित है? आंसर इज एस्ट्रॉइड। नेक्स्ट। दुनिया ने आज तक वन्य जीवन का सबसे बड़े पैमाने पर विलोपन का सामना किया है। प्लीज कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। आंसर इज 5। नेक्स्ट। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार टाइगर की आबादी सालाना कितने प्रतिशत बढ़ रही है? आंसर इज 6%। नेक्स्ट। सोशल बबल का विचार देश के डोमेस्टिक बबल के मॉडल पर आधारित है। प्लीज कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट। आई नीड योर सपोर्ट टू कंटिन्यू इट, and PDF will be available on Telegram link. My Telegram link given below in description box. Now answer is न्यूजीलैंड। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर इज डेनमार्क। नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2020 में बेरोजगारी कितने प्रतिशत बढ़ सकती है या कितने मिलियन बढ़ सकती है? प्लीज कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स।
आंसर इज 2.5 मिलियन। नेक्स्ट, डब्ल्यूईएफ के फर्स्ट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का क्या रैंक है? आंसर इज 76। नेक्स्ट, मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को कानूनी पवित्रता देने के लिए एक मसौदा कानून बनाने के लिए पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? प्लीज कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। If you like this session, please subscribe, share, and like it. I need your support to continue it. Answer is निरंजन भट्ट। नेक्स्ट, लिस्ट आर्केड को आईयूसीएन के साथ किस राज्य ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? प्लीज गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। Thank you so much for today session. Please subscribe, share, and like it. Need your support to continue it because that is your own channel, Student World with Pawan. And I sure all question will be come from this 75 days session, and I think I will be cover up approx 1500 question in this 75 days session, and this session we will be cover up all question that come from November 2020 to July 2020. Please subscribe, share, and like it. I need your support to continue it. Thank you so much, and we will be continue in next session. Thank you so much for this session. Thank you.